evening, Assalamu alaikum, and we welcome you all here for another HR meetup. This is the fourth time we are conducting this meetup here at the International Leadership Training Institute. So on behalf of the International Leadership Training Institute, I welcome all the distinguished panelists here and all the guests who have taken time to be a part of this event today. So we believe it is going to be a wonderful time discussing the things which are really needed to talk about. And my member Naveed, she is going to be the moderator of the event. And Mansoor Saab, he will be assisting her as well. And now it's the time for Brother James Layton to give the opening remarks. So Brother James Layton. Good afternoon, everyone. Thank you very much for coming and joining us in this HR meetup and the Iftar party as well. We are very, very grateful for your presence, and definitely your presence is making us very honored. Thank you all the panelists for your time as well. I know that all of you are very busy, but it's still taken time, so we are very grateful. Today we are going to have a wonderful time together. I believe that we're going to know each other. At the same time, we're going to learn a lot of things from our panelists as well. I just wrote a little bit things of what I observed and also growing up with the circle where all my friends and the neighbor was Muslim. So it was a wonderful, wonderful time. The growing up, and especially the early morning, the prayer, and then what, going all the children together. You remember these things, right? Going and then going to the mosque and having the time together over there, then coming back. And especially the Iftar time, and when we used to travel by bus, and when the time came, and at that time we stopped the bus, and everyone serving the the drinks. And I have never ever seen that one person never received it or did not get it. Everyone got something. Everyone. It doesn't matter how many people is over there. That is the unique thing for me to learn, that this Iftar time have something for everyone. And this is, I'm really amazed. Till today, when I go in the circle or the bazaar or any other area, you will see a lot of people. They're sitting down over there, and everyone has something. You are a guest or you are a stranger. Everyone has something. So this is many things, and then definitely the prayer and the reflection. That is the charity the people they do. At the same time, there is a benefit. It's not only one kind of benefit. I have seen there is a lot of different kind of benefit as well. And today we're gonna learn from you about the self-discipline and how it is going to help us as well. And then devotion to Allah. At the same time, I would say that devotion to the mankind as well. That many times my family, where I grown up in Sylhet, in Bangladesh. Sylhet, where I born, is mini London city. From our city, there are more 80% people live in London. So it's a different city than other city. Where 80% people live in London is different. But all my neighbors, they are Muslim, and I saw that during the Christmas time they used to come and play the music so that we can do the singing. So this kind of unity, I have observed. And then when you moved to USA, US was different because Muslim is the minority over there. So we did not have much opportunity to see
the Ramadan in a bigger way than we see it here. But it is always fascinating to come here and see that how we actually care for each other at the same time, the sacrifice the people are making not only for their soul but for other and the saving the money, giving it to the poor. That is amazing, and I believe that we're gonna learn from our families that other help what kind of the benefit that Ramadan is having in our life as well. Thank you very much again, everyone, for coming and joining us today, and I believe that it will be a wonderful time together. Thank you. As your presence is valuable to us, we would like to know who is with us today. Would you mind introducing yourself clockwise so that we can interact with each other easily? Sir, from here. Abdul Rashid from Agas Consultants and Trainings. I'm one of the supporters of TILT since past 18 months. And it's a pleasure to be here. Would you mind passing on the mic? Yes, good evening. I'm Shaukat Mahmood. I retired from Federal Board of Revenue as a Chief Commissioner, and we, together with Mr. Rashid, we work in Agas Consultants. We have formed a separate company, and we are always associated with TILT whenever they have such nice workshops and seminars. Thank you so much, everybody. I'm Brother James, and serving with this institute, the International Leadership Training Institute. Next to Brother James Riazgil, one of the faculty members at TILT, and I also participate in teaching stuff. Thank you so much. Assalamu alaikum. This is Usman from Go Design Technologies. I am a CTO at Go Design, and thank you, Mansoor Saab, for the opportunity. Assalamu alaikum. This is Kashif Reed from Go Design Technologies. I am the head of HR and Sales Department. Thank you. Assalamu alaikum. This is Kinzer Khan. I'm from Go Design Technology, and I'm from HR Department. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Imran Nadeem, ex-group head HR, AWT. Currently I'm doing my own consultancy. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, TILT. My name is Adnan Rauf. I am providing my services on e-commerce industry on eBay. Ji, assalamu alaikum. My name is Faisal Qureshi, and I work for an IT firm in Islamabad called Expo Research, and I work in the HR department. Thank you. बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा नाम मंसूर है और मैं भी इसी इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ जिसमें आप अभी आए हुए हैं, द इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी दावत पे आज यहाँ पे आए। थैंक यू। Assalamu alaikum to all of you. I'm Shoaib Ahmed. I'm from Shalimar Rajan, Director of Operation and HR. This is all for me. Assalamu alaikum. I am Rameez Akram Khan, faculty member at Araday University Rawalpindi, and also working with NGO Info-Nova. And thank you, TILT, especially Brother James and Mansoor Saab. Thank you. Thank you, TILT, for inviting me. It's always a pleasure to have company of Mr. James and your team. My name is Abdul Rashid. I am a teacher at Arab Agriculture University, and I'm also, I say, handling a small NGO concerned with training, ECFELO. Thank you very much. Thank you. My name is Steven Sinasi, and I'm from Arab Agriculture University student. Thank you. No. That person. Yeah, after writing. Okay, my name is Mohammed. I'm a research assistant at Cal Azam University. Thank you very much. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं नौशीन प्राचा से कि प्लीज इंट्रोड्यूस टू आवर ऑडियंस। Assalamu alaikum ji. This is Nausheen Paracha. I am a global award winner education expert. I am a trainer and international speaker.
Akhtar, Program Director and Advisor of Family Relief USA. And I'm running my non-profit organization and I'm running my school as well. Thank you. Assalamu alaikum ji, is it working? Yes. I'm Mohammad Sajwani. I'm the Managing Director for Evolve HR Consulting, and also shortly I will be having some interaction with Tilty. By the way, I'm there on their website anyways, as a facilitator. So let's interact more. And the topic of today is quite close to my heart, and I'm sure your hearts as well. So let's open up and discuss and make use of this opportunity that Tilty has provided. Thank you. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes. My name is Ifat Agha and I'm Director of Operations at I Engineering Private Limited. It's a software company, and I have worked most of my life with telecom companies and now software. I look after HR, admin and accounts, and the subject today is always is every year a very important topic, because this is a time where we need to not cut back on our work and not cut back on our deliverables, yet be kind, be understanding and accommodating for employees. The combination and the effort to do both at the same time is very hard. So thank you for inviting me, and I'm here to learn as well from the topic. Thank you. Yes, assalamu alaikum everyone. My name is Salman Ahmed. I'm the GM of Professional Development Center at NASC. So as the name says, professional development, we provide trainings for the industry professionals. We've done partnership with Tilty, and we've jointly done some programs in leadership and management and a few other short courses. And thank you so much, Tilty team, Brother James, Mansoor Saab, for inviting me on this panel, and looking forward to have a really good evening. Shukriya. I'm Kavita Jalal, one of the faculty members here in the International Leadership Training Institute. Assalamu alaikum. I'm Amber Naveed. I'm an HR consultant and an educationist. Currently, I am doing some consultancy as a head of an institution. This is a university, and today I'm going to moderate this session. And I welcome you all on this panel. So, Mansoor sir, should we start now? Sure. Just a minute, हमारे गेस्ट भी आए. Afzal Tahir, principal of FT Care Intelligence Center in Rawalpindi se. I'm joining first time and hope that I will learn a lot from you, inshallah. Thank you very much, sir. Thank you for joining in, sir. Now I will request Mr. Mansoor to please join my member to moderate the session further. Thank you. Thank you very much. Okay, today's topic is about employee well-being and Ramadan. So it's not something which is very new to us. It is those who are in administration or in HR are dealing with this situation, I think, since we have started working. So today what we want to focus is that is the company where you are working, or if you have an idea, that what kind of strategies do you think should be implemented during the month of Ramadan, that it will create an environment where whatever work we do should be productive. As we approach to Ramadan, everybody thinks that there should be less work, less timings, and hum sab ye kehte hain that productivity is low. So what we can do that our productivity can be increased, or at least it should be beneficial. So we'll start with you. Can I? Yeah, so I think it's a very good topic, very relevant to this month. And as Ms. Amber said, that the normal concept of everyone is that when Ramadan comes in, we sort of go back into that laid back attitude, which is, I think, very unprofessional. So how do we sort of bring up the productivity
and do the performance so that the organization is not suffered and the team is not suffered? Well, as you all know, that Ramadan is a time of where we sort of show a lot of patience, not only in in everyday tasks that we do, but all the bad habits, for example, lying and things like that. So it's all about patience, self-control. However, time management, as you all know, is a very important factor. So I think in Ramadan we need to focus more on the time management perspective. So what I mean by time management is that, so we need to prioritize things when we come to the office. For example, we've got high priority things that needs to be done as soon as possible, because when you come in the morning, a fresh mind is there. So normally, when the time goes along, maybe most of the people here, they must have heard about this terminology which is called 3:30itis. Yes. So, when you reach towards the afternoon, that's when your sugar level keeps on dropping. So especially in Ramadan, because you haven't done the breakfast, or the breakfast is done early Saturday morning, which is around 4ish in the morning. So when you come to office, so you need to prioritize something which needs if you want to do the meetings with the staff, so you can do those meetings early in the morning when you come to the office. Plus, I think I'm a firm believer as well that during Ramadan we don't have these refreshment breaks. Yes. So that is the time we can put more sort of focus on the work. So productivity can increase from that perspective. The meetings are short because we don't have refreshments or cakes are served or biscuits are served or sandwiches are not there. So we are more focused towards doing the work. So that I think is the main areas where we need to focus on during Ramadan, and that's how we can bring up the productivity. The other thing is that we need to, before Ramadan, what I normally do is with my team is sort of 1 or 2 days before we sort of give them a mentoring that okay, the Ramadan is coming, so how are you gonna do that? How are you gonna do your time management? So we're gonna sit together in a meeting, just chit chat about it, do some brainstorming sessions, and we tell them that look, the first 2 or 3 hours we will be doing this, and the remaining we'll be doing few other things which are not that important. So that's how I think we can sort of resolve this productivity issue. Good. So thank you. And my take from your talk is that it's time management. So during Ramadan, the time management is very important. I do agree with you that when the time is reduced, then you have to plan it more productively. And early mornings are the time when you can have your productive meetings or the time where you can start the work. So taking this along, so what do you think that we manage the time and we have reduced time, and then we have given a good slot to our main chunk to one specific area. Then how do you think that thing will help your employee to create an environment in which they can have a balanced work routine? Because people are mostly sleep deprived. When they are coming in the office, they are sleepy. And we are planning to have a meeting early morning. So when they come in the morning, they are a bit sleepy. So how to energize them so that when you make them sit in the meeting room, they are alert and they are ready to work. So how do you do that? Yes, sorry, getting wrong again. Okay, so this is tough. A lot of what you've already said, I agree with. We should prioritize. Time is very important. Time management is very important. And you also talked about coaching people a few days before Ramadan. I think a few days before, and along the way, you need to have a lot of mentoring sessions with them, a lot of information sharing. A very simple thing is that a lot of people don't have samoon. They will have a cup of a glass of water or milk, and then quickly say their prayers and go to sleep. And that is one of the reasons why energies are so low. So first of all, sharing information with them, how important that is. If the company is giving you some off time, the company has a lot at stake, right? So now it is the responsibility of the employee also to meet the company halfway. So
there are some things which they can, if I do not have breakfast or sahur in the morning, I will not have energy. So I will not be able to keep my eyes open during meetings. So it is my responsibility to make sure at least that I am having a proper breakfast and sahur, and so that I am vigilant or mentally agile while at work. So that is the responsibility. Now we need to share these things. And इसके अलावा flexi times, maybe some companies who can do it can also offer flexi time. People can come in later or maybe come very early, maybe after sahur, and work starts and then finishes early, so that we can give full 7-8 hours. We can do that also, but not everybody can do that. So that's one thing that we can do for a better, balance. Improve productivity. Yes. So what I got is that flexible timing is one thing, but do you believe that, like we know that in most of the Arab countries they work from after the start itself. So do you think this is a good thing to do, or would they improve the productivity, or again it's a relaxed time for the companies? They can double-edged sword. Because if you start working after sahur, so that means all the energy hours are spent working, and then the rest of the time is sleeping. You don't have family time. So that I don't think is a very balanced way of approach to work. I don't think so. But I think what we need to do is little flexibility in the hours, and little flexibility from the employees doing their share. But I really like the idea of mentoring, because if you mentor your employees that this is your requirement, as you said rightly, so that the company is doing their bit, they are providing off timing, so the rest is with the employee, that he should or he or she should be ready for the productivity as well. Thank you so much. One thing I would like to add here, just quickly. Normally, I also tell my staff that think about iftar. So if you want to bring your energy level up, think about iftar. So sometimes आप इसी को फिर आगे लेके चलते हैं. And we talk about well-being. हमने अभी रमजान timing की बात की, flexible timing. We're providing them well-being. It's a well-being for the employee. I think the HR is thinking for the employees and providing their part. Time short हो जाता है, and as Madam said that हम सब mentoring and giving, और जैसे उन्होंने बताया कि हम अफ्तार के बारे में उन्हें कहते हैं अफ्तार. So do you think that do we have to plan iftar parties for them? Provided your budgets for that, I don't know. GT has some budgets today, and they are serving us iftar. That's why I'm here. So this was not like, but yeah. I think सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है, और ख़ास तौर पे इफ़त और मैं, क्योंकि टेलको से ताल्लुक़ है हमारा खासा, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक चीज़ हमें घूंट के पिलाई गई है, वो है एम्पैथी. एम्पैथी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये हमने इतने सुने हुए हैं कि अब हमें लगता है कि इसके बगैर शायद बाहर की दुनिया में. But as soon as we stepped out of telecom, we realized these things really exist. और मतलब वो कहते हैं ना, the world outside telecom is not as great as we felt कि ये इतनी ज़बरदस्त होगा कि जिसके अंदर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा. I totally agree with you, because telecom is an industry which is providing all kind of well-being to their employees, but there are other organizations as well, other industries as well. और बाकी इंडस्ट्रीज में भी I think अगर the top guy, last time भी हमने इसी मौजू पे बात की थी, the fish rots from the head. Yes. And if the top man understands कि वहाँ अगर empathy है तो फिर HR तो क्या फाइनेंस के अंदर भी empathy आ जाती है और सब कुछ हो जाता है. तो ये खासा इम्पोर्टेंट एरिया है कि जिसमें हम ये रियलाइज करें कि हम रोबोट से काम नहीं करवा रहे, हम इंसानों से काम करवा रहे हैं. और जिस तरह अभी कहा गया कि जी अगर सहरी करके नहीं आते लोग, तो वो लोगों की तबीयत भी इस तरह होती है टाइम्स. यू डोंट फील लाइक ईटिंग अर्ली मॉर्निंग एट 4:30 और 4 o'clock फॉर दैट मैटर. तो लोगों को, इंसानों को हम अगर एम्प्लॉयर्स इंसानों की तरह ट्रीट करें तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरा हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है.
So this is a month for empathy. I do agree with you that we इसीलिए हम companies की time short कर देते हैं, and जो हम इफ्तार parties का जिक्र कर रहे हैं वो भी part of empathy है. Can I add to that? I think those are very important. इफ्तार पार्टी होके चाहे one dish कर लें. If you don't have a budget, we can do one dish. सब घर से ला सकते हैं. But getting together, spending the iftar together, that is very important. What I like about Ramadan is that this is the time when to get together. अगर वैसे किसी के पास time नहीं भी होता, you said that you are busy, you cannot come, but when you invite someone for iftar, people make effort to come and sit together and talk. This is the beauty of this month. So mostly companies are doing it. आप वाली बात की है, कुछ budgets नहीं है, लेकिन I agree with that. It's just that you have to see that how. कंपनीज के पास बहुत सारी चीज़ों के लिए बजट्स नहीं होते, जहाँ पर और वो चूँकि CFO साहब को अगर गौर से देखें तो शायद वो दे भी दें, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए. वंस इन अ व्हाइल अगर ईद मिलन हो सकता है, और अगर बाकी जो है वो क्रिकेट मैच हो सकता है और सारा कुछ हो सकता है, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ द फेस्टिविटी and we should celebrate it. Yes, this is the month for celebration as well. So this is one way that we can sit together, we can talk, we can discuss, and we can eat together. And this is the beauty of this month is that we all eat at one time. So that's one thing which can be. Last एक जुमला जो मैं कहकर I'll pass on the mic. जिस तरह मैंने कहा कि let's treat our employees as human beings they are, of course. और अगर मैं जो हूँ वो सीनियर मैनेजर हूँ, if I can take say I work for 4 hours and I expect that the rest of my team members will work for 8 hours, जो भी टाइमिंग्स हैं वो रीजनेबल टाइमिंग्स होनी चाहिए या ड्यूरेशन भी रीजनेबल होना चाहिए, कि जो हम अपने ऊपर रख के देखिए कि do I fit into that setup, कि अगर 8 घंटे हैं या 4 घंटे हैं या 5 घंटे हैं, तो उसमें हम फुल अपनी टीम के साथ, डेडिकेशन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. बहुत कंपनीज में मैंने देखा है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप ऑफिस स्टार्ट करते हैं यू फिनिश बाय 2, दैट आल्सो वर्क्स, बिकॉज लोग जो है वो शहरी के बाद फिर जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं. बट अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जी इतनी ट्रैफिक जो इस्लामाबाद में भी आजकल है कि अगर आप 5 बजे ऑफ करेंगे तो लोग बड़ी मुश्किल से 7 बजे घर पहुँच सकेंगे, जो कि रास्ते में ही इफ्तार को मिलेगा. तो वो जो एम्पैथी अगेन मैं इस पर बात करूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग, और ख़ास तौर पर एक इसमें एलिमेंट है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं मैंने उनको देखा है और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दे हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर दिस month especially, and they go out of the even newspapers में एक सिख साहब जो है वो आजकल कहीं पर इफ्तार करवाते फिर रहे हैं. That is something so nice. पिशावर में yes. So इस तरह की चीजें जो है वो हमें भी मतलब देखने वाली है. Yes, this is something which is very encouraging. And coming to Nosheen, what are the best practices you want to share with us? Like you must have experienced yourself, or you must have offered to your staff as well. So what are the best practices which you have in your bucket that which can improve the productivity of the employees during the month of Ramadan? Thank you, Amber, and thank you, Jyoti, for inviting me here. I would like to add here that one should have discipline and balance during Ramadan, or either if we are in Ramadan or other than that, we have to be balanced in a balanced life. So I think we can work better if we have the balanced professional and personal life. And बिल्कुल जी रमज़ान की तो एक अपनी ही वैल्यू है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो एंड एम्प्लॉइज को इतना ओवरबर्डनाइज नहीं किया जाए. एक और चीज़ जो मुझे क्लिक करती है दैट इज ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, which I believe, because I'm also working from home, and I believe that if something can happen, if we can say to our employees that yes, अगर वो घर से काम कर सकते हैं तो वो करें. Otherwise, the short timing, of course, flexible timing works as well. But बात चीज़ें ऐसी होती हैं sometimes कि उन्हें डिजिटली काम करना पड़ता है, जैसे आजकल का दौर है कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया का हैंडलिंग एंड एवरीथिंग. तो कोई ऐसा काम जो हम अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है that is much more helpful. So this is the practice which you have gone through with it, और आपने इसको practically किया भी है.
प्रैक्टिकली ये है, अगर कुछ डिजिटली वर्क हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो आई डेफिनेटली प्रेफर दैट कि जरूरी नहीं है कि वो यहाँ आके वो काम करें. I totally agree with you that if the work can be done at home, can be done online. So let's take Mansoor Sahab on board now. Thank you. थैंक यू वेरी मच आप लोगों की पार्टिसिपेशन का, आप लोगों के सवाल के जवाब का. यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मुख्तलिफ जगहों में काम करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर में काम करते हैं, डाइवर्सिटी के साथ काम करते हैं. उन लोगों की भी ओपिनियन ली जाए कि रमज़ान के महीने में जो प्रोडक्टिविटी है और वेल बीइंग है उसको किस तरह मेंटेन किया जाए. क्योंकि जब हम वेल बीइंग के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर सफ़र करना पड़ जाता है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में. जब प्रोडक्टिविटी की तरफ आते हैं तो वेल बीइंग रहती नहीं है. तो इस बैलेंस का होना बड़ा ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मेरे साथ मैं जी चाहूँगा कि बात करें हम लोग इस पर. शौकत साहब प्लीज. Jay, thank you very much. I would just like to add that in public sector, government offices, the office timings are already from 8 to 1 p.m. and Friday is probably from 8 to noon. So I think that the government or the public sector, they are already catering this requirement since I always hear that timings have been changed during the month of Ramadan. And 1 p.m. means that the employees have enough time to reach back to their home, whether if they are coming from Rawalpindi or Barakah or Mari, they can conveniently go back to their home. And this aspect of the public sector side, as I said, is very well followed and observed. And that's another thing that the people may not come exactly at 8 o'clock, they might come late, but they always go by 1 p.m. Okay? The other aspect, like, as you said that some people can be asked to work online as well. So, since I represent a finance department, a department which pursues the revenue collection. So it is to be seen that how things are to be monitored if a separate person or a group of persons are to work from home online. And the other aspect in public sector I have seen, and they are practicing as well, that we have seen in this COVID season that if there is a staff of 30 people, they work on the 50% ratio, and 50% of them they are not coming for 2 days, and then 50% they switch over, then the group changes, and I think they are already looking after these aspects, and this should be followed up religiously, and I think this will be helpful for some staff. Thank you. Just wanted to tell you the public sector side. Just to add few comments, I will not repeat all these comments what are said by honorable panelists or other members. They are all very, very relevant. But I think important thing is that we set the tone of Ramadan. The organizations, the way there are low term, high term, seasonal work, unseasonal work, priorities, projects, so on and so forth, they have their priorities. Likewise, in their annual plans, they have the planning for the month of Ramadan. During that month, they do all these things what are mentioned to create a culture which gives a letter and spirit of Ramadan to everybody. And everybody feels why they have to maintain the spirituality of this holy month. How they can achieve the success towards the Jannah and stay away from hellfire, for example. So it is the planning which matters. The flexibility, reduced times, looking into their well-beings, giving them the flexible work, looking into the team effectiveness, who can do what, etc., etc. So to me, I think this is all depends on the organization's culture, how they plan for the month of Ramadan, and they believe in letter and spirit that employees' well-being is critical
fundamental for the productivity during the month of Ramadan. Thank you. Thank you, sir, for your take. Suhail साहब, आपकी तरफ. Thank you, to all of you. I would like to add some new research that have been conducted recently in 2023 on annual month of Ramadan. This research conducted on 96 respondents, from where 37% revealed that their Ramadan fasting have negative effect on their productivity. 80% of the respondents come up with the views that Ramadan fasting have increased their productivity, and not more than 8% people have the viewpoint that Ramadan fasting does not have any effect on their productivity. So the question arises over there is Ramadan does have any effect on productivity? And so when we go into that, we will come up with the viewpoint that Ramadan fasting does have much effect on productivity. That directly affect on the concentration, productivity, and performance. So that is the solution of that. Flexible working hours should be provided to the employees so that the productivity can be increased, and so far that should not be disturbed by the Ramadan fasting. So as far as concerned of well-being of employees, subjective well-being, come up with the results, and happy work hypothesis come up with the focus point and supports that idea that high level of job satisfaction may have positive effect on productivity. And as far as there is the well-being is in low in general or in work hours, that have negative effect on employees' job satisfaction and their production. So as far as concern of Ramadan fasting has some effect on performance. So that is 11 researchers have met the inclusive criteria. The result revealed that the Ramadan in mean or peak hour, Ramadan fasting has deleterious effect on mean or peak hours during wind gate or repeated sprint test. In morning, sprint performance is negatively affected by the performance and their productivity. So the thing is that during Ramadan fasting, we should Thank you so much. We got your point that during Ramadan, because of the fast and sometimes there is a lack of interest. We should provide such circumstances like yes. be able to pray on time. Yes. So this is what the companies are normally doing, that during Ramadan. I can share a best practice. I have worked in different organizations. What we do is that we can make a play area for during the month of Ramadan. They can have namaz together, or again that we talked about the evening meetings, scheduled meetings, early hours. Yes. So these are the things we can look forward. Yes, ma'am, if you want to add I something. just wanted to add on that when you talk about productivity. During the normal days we have tea breaks, we have smoke breaks, we have lunch break, and the tea breaks continue and continue and continue. So what I've noticed is that if you take all the breaks away and you don't have that cup of tea to look forward to, so you have nothing else to do but work. So the productivity does not shrink as much as the employer may think it does, because people are not wasting so much time chatting and having tea and everything. So I think that's slightly exaggerated. Yes, productivity goes down, energy goes down, but not as much as maybe some employers may think. And adherence, when you talk about flexi times, so good employers give flexi times. But then it is very important that when you give flexi times, for example, 8 to 2, okay, you ask your people to come at 8 to 2, then you want your people to come at 8 and leave at 2 to do that work. But if you are still coming at 9 or 10 and leaving on time, that should be provided to them. so yes, but yes, but it's a two-way street. So
we have to meet, you know, we have to, the hands have to clap together to get That this. should be distributed through email. So let's move on to this, and we know हमने flexible time की बात कर ली, हमने अवतार पार्टी की बात कर ली. So all what we can provide from an HR side we did. So what is my question to the panel is that what is the way, how can you track the productivity? ये सब कुछ आपने हमें provide किया, flexibility भी दी, time भी short किया, everything is done. So how do you track their productivity? So is there any tool, is there any matrix, is there any rubric on which we calculate their productivity? Yeah, okay. Look, I think the bottom line is the desired result. If you're achieving the desired result, that, for example, you're given an assignment to one of your team members, and you think that that has been done, now regardless if that has been done during the night or during the day, you see, so I think you have achieved the productivity. So for example, you give them a timeline and you tell them that, look, I need this particular thing done by 10 a.m. tomorrow morning, right? So now that you get that project done, or you get that deliverable to your desk, say around that 10ish, so then I think you have achieved that, regardless of how that person has done it. So in my dictionary, it's not something that you have to be sitting on your desk to be productive. It's something that you can take home, as we now sort of, because of this COVID thing, a lot of, and as we just talked about this work from home perspective as well, so they can take that work home and they can do it over there during the night, during Sahur or whatever, and in the morning they come up and they say, look, this is done. So, right? Yeah, I do agree with you, but it depends on the nature of the work which we are doing. There are some work where you need to be present, like if I talk about the education sector, a person has to be there in the campus or in the school at time. It varies from industry to industry. But in your case, then it does work. But generally, yes. I mean, you can define the timelines. Timelines, yes. And if So, that has been delivered during the timeline, so I mean, you've done the Sure. So, Mr. do you have any best practice on this? That where you had such kind of environment and you're giving them a task. So how do you track them? Do you give them some rubrics to be filled before, or something like that before Ramadan? You tell them that these are the tasks and how this is the way I'm going to observe you. Okay, so tasks either monthly or pre-Ramazan or daily, you have to just plan them well. So if you need your team to do something, deliver something, or an individual to do something, then you have to make that plan and give them deadlines. Okay? If that task is delivered to your satisfaction by the time, target issue. It's that. So there is no change whether it's Ramadan or any other time, but the target needs to be achieved as per the requirement of the organization. So from the organizations can make their targets a little flexible, but targets have to be flexible. Yes, of course. So moving on to this. So now after listening to this, that we have flexible time, we have all the effort from the company side. What do you think an employee has to do to prepare himself or herself for Ramadan? Because the employee side से अगर मैं बात करूँ तो they think that it's a relaxed time. There would be less work, there would be less targets. But if you talk about the company is working on the same pace, and the world is running. And the business is moving on. There is no stop on business. So of course, if a mindset is relaxed, then how you as a manager can instill that energy in your employees? Employees, I think they take their work seriously. They have to really work. And I have worked for telecom as well as hospitality as well as मेडिकल, तो इन तीनों सेक्टर्स में खासतौर पे अगर कॉल सेंटर है टेलीकॉम में, तो दैट हैज टू बी मैन 24/7. उनको आपको फिजिकली सर रिटेल आउटलेट्स हैं, तो उनको जो है वो सुबह 9 से लेकर रात को 7 या 8 बजे तक ओपन रखना है और उनको करना है काम. अब वो अगर डिलीवर नहीं करते, अपने टारगेट्स मीट नहीं करते, देन दे विल बी क्वेश्चन डेफिनेटली. So sorry, I missed my point. What do you suggest to the employees, that how do they prepare themselves for this thing? हम तो as a manager हमें सब provide कर रहे हैं, but like for example those who are sitting here, including myself,
when I'm going to work during Ramadan, तो मुझे होता है relaxed time, कोई काम नहीं होगा. So how to change that ऐसा मेरा ख्याल है mindset? एम्प्लॉय का भी माइंडसेट नहीं होता, they go for work. नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे employees हैं. Then you must do something about it. Yes. Because अगर इस तरह के employees हैं तो वो खतरनाक बात है definitely. और जहाँ तक शायद मैंने अपने करियर में जो हॉस्पिटल में you like it or not, वहाँ डॉक्टर का होना जरूरी है, नर्स का होना जरूरी है. But मैं यहाँ पे आपको ऐड करती हूँ, like hospital है, या मैं कोई चीज इसको point out नहीं करी, but this is something which I've observed. During the month of Ramadan, we all want to pray a lot. तो हम during office hours भी हमने देखा है लोगों को वो नमाज़ें बहुत याद आती हैं. कुरान पाक पढ़े, नमाज़ें पढ़े, तस्बीह कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे वो हमारे ऑफिस आवर में से जा रहे हैं. हमने उनकी ब्रेक्स ऑलरेडी खत्म कर दी हुई हैं इसी वजह से कि वो घर चले जाएं और घर जाके सब करें. इस चीज को आप कैसे लेते हैं? मैं कोई इसको नेगेटिव उसमें करें, थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है, because लेकिन we do pray, we do give them chance to I don't pray. want to put myself in trouble on the religious front, लेकिन ये है, I mean even dressing में भी मुझे याद है कि जब मैं टेलेनॉर में था तो कुछ लोग शलवार कमीज और चप्पलों में आना शुरू हो गए थे ऑफिस. और one day the CEO called me, what is happening here? I mean, are they working or are they in the park or are they sleeping? What is this? फिर कुछ लोग जो है और चूंकि egalitarian culture में फिर आप ये चीज़ों को जरा गौर से देखना और उसको पिन पॉइंट करना भी प्रॉब्लम है. कुछ जिस तरह आपने कहा कि वुजू खाना या नमाज की जगह, ये देखें, we need to understand one thing, that namaz is not meant to be offered in Ramadan only. This is an obligation to every Muslim regardless. और आपने जो है वो दफ्तर में आपको वजू खाना चाहिए या फिर नमाज की जगह चाहिए, वो सारा साल चाहिए. Why in Ramadan only? कुरान शरीफ पढ़ना है, पूरा साल पढ़ना है, तस्बीहात पढ़नी है, नहीं पढ़े आप अपने देखिए अपने पर्सनल टाइम में भी. अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 10 minutes to think and connect with the divine, you can do that. Nobody stops you to do that. आप दिल में क्या तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आपका और बिल्कुल आपके अल्लाह का मामला है. तो मैं ये समझता हूँ कि हमने थोड़ी सी अननेसेसरी हाइप भी क्रिएट की हुई है खामखा की कि जी इस महीने में जो है वो लोग ज्यादा इबादत करेंगे तो इसलिए उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जाए या दी जाए डेफिनेटली. बट वो पूरा साल, मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जहाँ पर एक प्रेयर रूम है, वहाँ हिंदू भी आता है, वहाँ पर क्रिश्चियन भी अपनी प्रेयर करता है, वहाँ मुसलमान अपनी नमाज पढ़ता है, सिख अपने रिचुअल करता है, एंड सो फोर्थ. तो इंटरनेशनली ये चीजें हैं. तो हम जो है वो कोई नई चीज इजाद नहीं करें, वी आर नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील. सो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है. मेरे स्टाफ कभी भी मुझे कहते हैं कि मुझे जो है वो नमाज के लिए ब्रेक पे जाना है, मैंने पहले दिन उन लोगों को बता दिया यू डोंट नीड टू आस्क, दिस इज यू. जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि ये आपका जॉब असाइनमेंट है, उसको आप मुझे चाहे आधी रात को डिलीवर करें या अर्ली मॉर्निंग डिलीवर करें. डू व्हाटएवर इफ यू वांट टू पे. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास प्ले एरियाज भी हैं, जहाँ पे जिम्नाजियम भी है, तो वो अगर पूरा दिन जिम्नाजियम में गुजारते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा as far as they deliver their work on time. Because so Noshik can add into this that different employees have different mindset. What I want to bring over here is that these are the practices which we are going to. बहुत अच्छी practices हैं इसमें, like we do have prayer room, everybody can go and have prayer as ज्ञानी सब कहते हैं. ये कोई जरूरी नहीं कि Muslims can only go and pray, everybody can go and pray. But जब हम बात करते हैं employee के mindset की, so you've been running a school and an NGO where people are coming from different backgrounds and they have this mindset. हम जितनी भी बात करें in this country, people do have such mindset कि यहाँ पे हमें इस time को हमने ज़्यादा utilize करना है. So how do you make your work more productive with this change of their mindset during Ramadan? एक नया mindset नजर आता है. Thank you so much. अव्वल तो आना नहीं चाहिए ये mindset, लेकिन ये आता है. The very first thing कि whatever we do in our organizations, कि मैं पहले से ही plan करवा रखती हूँ
کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں, you have to deliver these things and these are the deadlines. تو پہلے میں یہ کام پلان کر کے اینڈ بفور رمضان ان کو ٹارگیٹس مل جاتے ہیں, that they have to achieve. That's a very good idea that you give the targets before Ramadan. It's a priority and میری آواز آ رہی ہے جی. So it's a priority and we plan before Ramadan and just give them deadlines. یہ آپ نے کرنے ہیں, اب چاہے آپ ادھر کرتے ہیں, گھر لے کے جاتے ہیں, جس طرح بھی کرتے ہیں وہ آپ کا کام. وہ بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے جو آپ سے کوشچن یہ کہی تھی, like if you see someone, if you're a teacher and she has to take the class, so how would you اس کو آپ نے hurt بھی نہ کریں, but how would you convey to that person that you are allowed to do your prayers, but in a limited time period. So we have the timing, we have a fixed timing, and half an hour you can take for your prayer time or your break time. Either you want to go out or you want to pray, it's your time. You cannot exceed your time more than that. Because physically they have to be present in the classrooms or either in their offices. So in school environment, it is all done by physically. So we have to assign and we have to give them time limits. As I said earlier, discipline and balance. It is very important in Ramadan or all over the year. So thank you. That's a good idea. Yes, sure. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا کہ ایز اے مینیجر یا سینئر مینیجر یا جو آپ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو یو نو یور مائنڈ سیٹ ٹیم کا آپ کو پتا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہو از اے سلیکٹر اینڈ ہو از اے بول. تو آپ اس حساب سے مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. I'm not saying it to discriminate as such, but in a subtle way you can sort of work it out کہ کس بندے کو کتنا میں نے کام دینا ہے اور اس کو جو میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں یہ اس کی کیپیسٹی میں ہے یا نہیں ہے. یا if that person is a slacker, so then you know that وہ شارٹ کٹ کرے کیا کرے گی. تو آپ کو پھر یہ تھوڑا سا رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, because as a manager you understand your team. That's one thing which we as تو اس میں میں کہہ رہا تھا, میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں خود سے ازیوم کرنے کی کیا, میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی پینلسٹ کا حصہ ہیں اور آپ بھی اس کا جواب دیں کہ کیا یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جی اگر میرے پاس 100 امپلائیز ہیں اس میں سے 100 کے 100 نے روزہ رکھا ہوگا آج, اس وجہ سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے. آئی مین وی آر لیونگ ان اے ورلڈ وچ از گلوبل ولیج ناؤ, اور اس میں ہم ہر گورنمنٹ بھی یا پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے لیے کوشش کرے کہ جی ڈائیورسٹی ہو, inclusion ho, you want people from different faiths to come together in an organization and work. So why do we have to develop والا کرفیو لگانے کی نہ کچن میں ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ کچن ہم نے بند کر دیا جی پردے ڈال دیے سارا کچھ, وہ والا ہوا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آرگنائزیشن سے. ہمارے کچھ مائنڈ سیٹس ایسے ہیں, جیسے آپ نے مجھ سے بات کی کہ میرے پاس 70-80 امپلائیز ہیں, تو ضروری نہیں کہ سب امپلائیز نے روزہ رکھا ہوگا. There can be multiple reasons why the person is not fasting. اور پھر ہم جینڈر ڈائیورسٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. Then you don't have to judge that person that why he or she is not fasting. اور وہ اگر کہیں پانی پی لیں تو ہائے اللہ نہیں ہونا چاہیے. ہائے اللہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں, کوئی اللہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ میں نے بھی آبزرو کیا ہے. Things are changing, it's evolving. پہلے جو it's all here. کیسے آپ اس کو, yes, so it depends on the leadership. If the leadership is open-minded and is diverse and encourage inclusive culture, then these things are easier to manage. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر آپ ڈائیورسٹی اور ایمپتھی اور ان چیزوں کی بات کریں, اس کا ایک ایکسٹریم سائڈ بھی میں نے دیکھا ہے. ٹو اے کلائنٹ, ٹو مائی سرپرائز, کہ جی وہ چونکہ سعودیہ سے وارد ہوئے تھے پاکستان میں, تو ہی وانٹڈ کہ جی وہ ایک مائنڈ سیٹ وہاں کا لے کر آئے کہ جی اگر کوئی جو ہے وہ اہل تشیع ہے یا کوئی اور فرقے سے ہے تو جی وہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس پر ایک ڈسکشن, اس پر ایک کور میٹنگ ہو رہی ہے. آئی مین times are gone. We need to move on with this mindset. And diversity is that you should
should accept as one is. So, Yeah, I just wanted to add, why we talked about planning, we talked about discipline, we talked about having all those points which are said. For the productivity, we already agreed, determined that employees' well-being is critical. Having said this, the second word which is important for every organization, that's the productivity. Now, to me, every organization, generally, which is the corporate organizations who have corporate structures, they have their goals and objectives for each functional level. For the year, for the quarter, broken into months and the week. True. As I said before, they have month of Ramadan included in their plans in such a way that they don't, the management or the manager, they don't set the rules for the month of Ramadan on solo basis. No. They get employees on board. They take all the stakeholders, the line managers, who can pass on that message onwards to every team across the board that during this month, these are our KPIs, these are our GNOs. Everybody will honor it, own it with accountability and commitment. If that is done, then there's no need to watch, there's no need to have the clock, there's no need to have any punishment. Now, as I said before, as Ms. Machine has mentioned, mindset actually gets into the culture of the organization. How the things are done here. During month of Ramadan, the organization, they cultivate the culture. They devise their GNOs, KPIs. They leave employees to be self-assessors of those KPIs. Today is a digital world. Every those performance management system is on the digital tools. They have to just put on, you see as a manager, director, leadership, the team only see the dashboard. Which organization is green, red, or yellow. So if you trust employees, empower them, engage them early on, not during the month of Ramadan. Where were you yesterday? You was not in the meeting. It should not happen. It should be part of the game. So there should be a planning for this month, engaging employees, empowering employees to be self-monitoring authority of their KPIs. Thank you. So it's a very good point that one has to be, thank you. Self-assessment is very important, and during the month of Ramadan, of course, self-assessment helps us to engage ourselves in the work which we are doing. Now, can we engage the audience, please? मैं यहाँ पे अशरफ साहब को कहूँगा। अशरफ साहब बेसिकली हेड कर रहे हैं पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव को कंट्री हेड, और उनके साथ मोर देन 70 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पार्टनरशिप में काम कर रही हैं। तो उनसे पूछना चाहूँगा, आप लोग जो लेस प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी और वेलबीइंग के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? प्लीज। Thank you, Mansoor sir. Good afternoon and Assalamu alaikum. I'm Ashraf Mal. I'm the co-founder and CEO of Pakistan Partnership Initiative. Pakistan Partnership Initiative is basically a Christian faith-based organization, an NGO. And within our organization, we have Muslim staff as well. So keeping in mind Ramadan and respect for it and the well-being of our staff, we have worked out timings with our Muslim staff. They sometimes come early, go back early, but it does not impact the productivity of their work. I think the month of Ramadan also provides an opportunity for us being Christians, an opportunity to respect other faith, also learn from that faith as well. By default, sometimes we also end up keeping a fast during the month of Ramadan. And I think fasting is very important. We fast in the Christian faith as well. And I think it should not impact
the productivity of your work. Being a Christian, I fast as well. And I think my mindset is to be more productive during the period of fasting. I think where undue advantage is taken of fasting and the productivity level falls, I think that should be discouraged. It does happen. I can give you examples. For example, my daughter, she studies in one of the top schools here in Islamabad, but during the period of Ramadan, she hardly has any classes. And I think that doesn't set a good example for the younger generation as well. And I think we should have a positive mindset to be productive during Ramadan and set an example for everyone. So, thank you. Taking on from your point that बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा intermittent fasting. People are doing that as a to reduce weight and weight loss. So that is okay. You can do intermittent fasting and you can work all day, and then you don't have any problem. But when it comes to a religious fast, then it becomes something where you're dehydrated and where your energies go low. So I totally agree with you that the fast does not do anything जिससे आप काम न कर सकें. So coming back to the panel, we were discussing about online work and like if you have worked with multiple time zones, like I've been working with some multiple time zones, and during Ramadan that at times it becomes a challenge. Not because that work is easier when you're sitting at home and doing, but the time zone is always a challenge. If you're working with US timings, then you have to, your timings are upside down. So if like you're working in a multinational company, do you have any practices over there where you have dealt with different time zones and keeping Ramadan in mind? So it's not only for Ramadan, otherwise. So what do you think that working with different time zones affect on the productivity of an employee? Look, I think COVID has really helped us in that. Because if COVID wasn't there, we wouldn't have been using Zoom and Teams and multi time zones. So with COVID, we've already overcome that phenomenon. And now we really know how to handle this multi-time zones and how to handle online work. Because COVID was there for, I think, good 12 months or maybe more, yeah. 2 years, yeah. So with that, we have really sort of attuned ourselves that how we're going to work with various time zones. Now what happens is that nowadays, the good thing is that you're working from home, so you don't have to come to office if you have different time zones. And the good thing is with the solid internet access pretty much in most of the the rural cities of Pakistan, so we can sort of manage that from home. We can be on Zoom, on Team, or Google Meet, or whatever. We can sort of share the screen. We have presentations. We can do that. So I think to answer your question, COVID has really helped us in achieving that sort of perspective. Yes. What's your take? Time zones, different time zones, that is a challenge. For example, if there is a meeting in the US, it has to be attended. Now, यहाँ पे empathy आती है. If the employer has foresight and has empathy, तो हम ये कर सकते हैं कि we let the employee go early, we reaches home आराम से, and then from home join the meeting only. We don't have to have the employee in the office. So थोड़ी सी empathy की बात है, but that is a challenge because जब हम मीटिंग कर रहे हैं US के साथ या यूरोप के साथ, तो they are not going to understand because they are not going through the same thing that we are going through. So it is a challenge. But empathy क्या होनी चाहिए? Local employer के लिए होनी चाहिए और उसकी understanding होनी चाहिए. Send the employee home early. Let him take the call from home. That's a very good point. That here we need empathy. जैसे आप बात कर रहे थे, empathy होनी चाहिए. So in such cases जहाँ पे हमारे पास इस तरह के challenges आ जाते हैं, तो we have to show more empathy. So now moving to this, as
what do you think that हमने multiple time zones से भी कर लिया और productivity पे भी बात कर ली. So what on a professional note, what do you want to suggest to the HR professionals that when this month of Ramadan is coming, what guidelines should be given from the HR department or from the administration department to the employees before Ramadan? During Ramadan तो हम उसको follow करेंगे जो हमने बताया. तो वो thought process जो है या वो आपको क्या लगता है कि what would be that guideline which should be given to the employees before the month of Ramadan? I'm working for more than 30 years now, and शायद मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो कि शायद 30 की एज ब्रैकेट में अभी तक हैं और खासतौर पे जो लास्ट रो में साथ बैठे हैं. पूरे करियर में मैंने सिवाय ऑफिस वर्किंग आवर्स के और कोई इंस्ट्रक्शंस आज तक इशू नहीं किए हैं ऑन रमजान. इट्स अ मैटर ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज अल्लाह, and they have to manage it the way they want to take it. They have to deliver their deliverables, Salman Saab ne kaha, or they have to do a job. I mean, do's and don'ts रमजान के अगर हम बनाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल उसका कोई एंड नहीं होगा. जी. So I take your point, but as employee well-being is the topic, and हम लोग जरूरी नहीं हम do's and don'ts की बात करें. What we can suggest जो हमारा जो new HR आपको पता है just 20 years के ये start हुआ, अभी ये जरा evolve करने शुरू हुआ है. तो हम उनको जैसे health benefits क्या हैं रमजान के and इन चीजों के ऊपर guidelines आप उनके पास गूगल अलैहिस्सलाम है, वो काफी है. वो बिल्कुल I mean they know everything. आज के बच्चे को जो है वो can you believe my 3-year-old grandson knows how to open an iPad and go to YouTube and search for the Bilpi or Bitly, पता नहीं कोई कार्टून है जो God, I mean 3 years old. So उनको अभी ये थोड़े से बड़े हो जाए, they would know everything and they know everything. I mean रमजान के फवाइद और नुकसानात तो खैर नहीं है, लेकिन फवाइद या उनके साथ जो है benefits attached है. बिल्कुल. But would you like to add something from an HR point of view? Yes, I really like what you said in the beginning. आपने कहा set the tone. That I think is very important. So I think we need to set the tone for Ramadan before, and we need to have it in our yearly plan, and we have to have the employees on board. Okay, this is how we're going to go. So how are you people going to manage your work? Let them also give their input. But we think we need to set the tone, and well-being employee की a good atmosphere and prayer breaks and prayer areas. That's how we can make it comfortable for them. So how I conclude this thing is that अगर आप मुझे बोलेंगे ना I've been running an HR department, what I'm going to tell to my employees will be I'm just going to share with them some good practices that how they can make this month productive for themselves as well and for the organization as well. Because when you're sitting in HR, you're not only for the employees, you're for the employer as well. So you have to keep a balance between the employer and the employee. So those won't be the guidelines, but the suggestions from HR point of view or from HR department. You can send some suggestions to them that how can they make this month more productive for themselves and for the organization, and some good practices can be shared with them just as a goodwill gesture. और फिर आप उन्हें रमजान मुबारक भी कहते हैं सारी इस तरह की. So जी बिल्कुल वो हम करते हैं. So now coming to the audience, we can take few questions or just a quick comment on yes, this sure. best practice when we're talking about. You see, I worked 41 years, just a little longer than you. I worked with General Electric, I was with the corporate art staff, traveling globally. There are time zone differences, we have been taking the call on Eid days, but the business never stopped. Not for Ramadan, not for anything else. Because they have already planned things in such a way. Now, as a suggestion for my HR colleagues, the way you have many other operating policies, guidelines, you must have one guideline designed for the month of Ramadan. Google में है
but from applied aspects, what are the benefits which will again turn into well-being of the employees. They should be on that policy guideline. And the way we have online e-learning, the trainings every year, all employees go. They should be 15 minutes, 10 minutes reading just for the sake of awareness, re-emphasizes on this Ramadan policy. So these things should be defined, mentioned there. If we have clearly defined, mentioned, communicated, and every year, a month before Ramadan, 2 weeks before Ramadan, there is Ramadan orientation session. It's done and employees are engaged in that conversation so that they should carry on doing those things which they do every year. And we should not look into any of these challenges. We think it's bottleneck, no matter it's timing zone, it's the attitude, it's the faith, etc., 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 because all this is covered in that operating guidelines. If that's what we do and we implement, we enforce, and on top of it, finally, we always give trust and respect to the employee. We should never ever do anything which when we touch his heart, it should give him a pain. We should touch his heart to give him comfort and peace so that he listens us and he follows us. Thank you. Thank you, रशीद साहब, आपका शुक्रिया, आपने पॉइंट रेज किया. रमज़ान में अक्सर ये देखा जाए कि रमज़ान को हमने बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे चले जाते हैं और दीगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम बहुत सी कॉर्पोरेट के साथ रब्ता कर रहे होते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिस दिन रमज़ान स्टार्ट होता है तो जब पूछें कहते हैं ईद के बाद, अब अगली बात ईद के बाद होगी, अगला प्लान ईद के बाद होगा. मतलब कि एक पूरा महीने की प्रोडक्टिविटी हमसे चली जाती है. ग्राउंड रियलिटी ये है देखी गई है. तो यहाँ पे मैं ताजमी साहब हमारे साथ बैठे हुए आज़ाद कश्मीर से हैं और इनसे स्कॉलर फाउंडेशन को ये लीड करते हैं. इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशनल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत अच्छा लग रहा है बहुत एक्सपर्ट्स को हम सुन रहे हैं. मैं थोड़ा से हट के बात करना चाहूँगा. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड के ऊपर तो बात हुई, उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बन सकता है. जब से इंसान है, आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम के अंदर रोज़ा किसी न किसी शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है. चाहे वो आज का हिंदू मत है, जैन मत है, बुद्ध मत है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदियत है, इस्लाम है, सब के अंदर रोज़ा है. तो इससे पता ये चलता है कि ये बहुत कोई इम्पोर्टेंट है, कि कोई वैसे नहीं है कि. और रोज़े के एक तो ये कि उनको फैसिलिटेट जो आप करने की हम सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली रोज़े का मकसद जिसके लिए रोज़ा है, चूँकि हम सबसे ज़्यादा जो खालिक है जिसने कि रोज़ा फ़र्ज किया है, वो हमारी जो हमदर्दी की बातें हम सारी कर रहे हैं, वो कहा जाता है कि 70 माहों से ज़्यादा वो मोहब्बत करता है. तो वो कभी हमें किसी मुश्किल में तकलीफ में नहीं डालना चाह रहा. बेसिकली हमें एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर इसमें हमें तकलीफ नहीं होगी, इसमें हमें पेन नहीं होगा, इसमें हमें दर्द नहीं होगा, इसमें हमें प्यास नहीं लगेगी, तमाम हम कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे, तो फिर रोज़े का जो बेसिक फिलासफी है वो फोत हो जाती है. वो जो इसका स्पिरिचुअल आप कहें या सोशल कहें, जो जैसे सोशल को तो आज आपने ऑर्गेनाइज किया कि हमें इस्लाम कहता है कि एक बंदे को अफ्तारी करवाएं तो इतना अजर है, ये है. तो उसमें जो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है, उसका जो फिजिकल इम्पैक्ट है, फिजिकल की वैसे आमतौर पर हम बात अगर अफ्तारी के टाइम के हमारे टेबल के ऊपर जो मटेरियल होता है, हमारा स्टॉमिक इतना फास्ट हो चुका होता है रोजे रख के कि हम तरबूज और पकौड़े को गड्ढे जलाते हैं और हमें कुछ नहीं होता, जबकि आम जिंदगी के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता. तो यानी उस रोजे ने हमें इतना फायदा दिया कि हमारा स्टॉमिक इतना फास्ट हो गया, उसकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ गई. तो हम उसको अगर इतने कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे तो वो जो बेनिफिट हमने लेने हैं सारे, तो वो हमें नहीं मिल सकेंगे. जैसे सर ने कहा कि एक हाइप क्रिएट कर लेते हैं, और अभी मंसूर साहब ने कहा पूरा रोजा हम 10 रोजों के बाद हम करेंगे, ईद के बाद ये करेंगे, तो हम पूरे महीने को अपने लिए एक बर्डन और मुश्किल बना देते हैं. जबकि ये जो हम बातें कर रहे हैं जितनी भी, तो ये हमें ट्रेनिंग हमारा मन थे, तो ये अप्लाई करनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल ही हमारे ऊपर इसका असर जो है वो नजर आना चाहिए, बजाय इसके हम इसको मजीद कंफर्ट जोन में जाने की उस पे लें. तो खुदा जो है जिसने हम पे ये रोज़ा फ़र्ज किया है, और वो इसलिए फ़र्ज किया है कि हम इसके अंदर इसकी सख्तियाँ झील के
اس کی تکلیف جھیل کے اپنے کام کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں. اپنی رسپانسبلٹی, اپنا جو کام ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں. میرے خیال میں تو چونکہ یہ ایریا مسنگ دیکھ رہا تھا, میں نے اسٹیج پہ بات کی, باقی آسانیوں کے لیے ساری باتیں کی گئیں. تو یقیناً میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں, تو ہم بھی ٹائم ٹیبل کو کم کر دیتے ہیں, بچوں کو کام کم کر دیتے ہیں, تو یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹف ٹائم ملنا چاہیے, تو ہی روزے کا بینیفٹ ہے. تھینک یو. سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی, مائی نیم از خلایا منوش. پینلسٹ کو تو میں نے تھوڑا سا بلیو کر جی باقی پینلسٹ کو تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن میڈم میری ٹیکنیکل سپروائزر رہ چکی ہیں پچھلے آرگنائزیشن میں. اس کے بعد میں پبلک اس میں چلا گیا, اور اس کے بعد پروڈکٹیوٹی کا جو ورڈ ہے اور جو اس کی معنی ہے وہ بھول گیا تھا. شکر ہے آج میں نے کافی سنا پروڈکٹیوٹی کے بارے میں کہ باہر بہت کچھ ہو رہا ہے, اور یہ تبھی مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں وہ پبلک آرگنائزیشن چھوڑ چکا ہوں. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جب بھی رمضان کے بارے میں بات ہوئی نا, جب بھی بات ہوئی تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلی بار روزے رکھ رہے ہیں. مثلا پہلی چیز ہوتی ہے ٹائمنگ, کہ جی ٹائمنگ کیا رکھیں, 7:30 سے اسٹارٹ کریں, نہیں 8 سے شروع کرتے ہیں, نہیں 9 سے شروع کرتے ہیں, نہیں 8:30 کرتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے ایک دفعہ 3 دفعہ لیٹر ٹائپ کرنا پڑا ہے ایک دن میں کہ نہیں ٹائمنگ نہیں چینج ہو گئی, یہ کرو. اور بریکٹ کیا تھی, 8 سے 2 بجے کے بیچ میں. آخر میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ہم 9 بجے سے 2:30 بجے تک بیٹھیں. تو میں اس پہ وہ کر رہا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم واقعی پہلی بار اسے رکھتے ہیں. اب آتی ہے بات کی پروڈکٹیوٹی ان رمضان. اچھا, اس میں تھوڑا سا پہلے مائنس میں جاؤں گا, پھر پلس میں آتے ہیں. اپنی تھوڑی سی جو میری ہے اپنی سوچ ہے, امید ہے سر باقی لوگ بھی شاید دفاع کریں اس بات سے. پہلی چیز جو سیلف اسٹیم کی بات ہوئی, کبھی ہم نے نہیں کی. تو پروڈکٹیوٹی ہماری کیسے اچھی ہوگی جب ہم نے کبھی کی نہیں. میں اب کر رہا ہوں, مطلب مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ بیسیکلی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. بہت عجیب غریب ٹائپ کی بات ہے. اور یہ نہیں کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو فائنینس میں تھے وہ HR میں آ گئے, HR والے سیلز میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ, وہ سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ وہ بچے کو ٹرین کرتے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ چیز تو نظر ہی نہیں آئی. اس کے بعد جو ہابیز ہیں اس پہ دیکھنا چاہیے, آرگنائزیشن بیہیویئر کو. یہ میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے اس حوالے سے. اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا, دوسرا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ کام اسلام آباد میں کرے ہوں گے اور رہتے ہوں گے پنڈی کے اس آخر پہاڑی کے پیچھے, تو اپنے آپ کو تکلیف دینے کا ہمیں بڑا شوق ہے. اب آتے ہیں رمضان کے ٹائمنگ کے بارے میں, جنہوں نے کہا کہ لوگ چلے جاتے ہیں مسجد میں. اور یہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ 90% اسلام جو ہے وہ رزق حلال ہے. 90%. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسجد آ گیا ہوں اور میں ادھر سو گیا ہوں. مطلب ہوتا, ہمارے ایک ساتھ تھے وہ گھر نہیں جاتے تھے بیکاز آف وائف کے ساتھ پرابلمس تھیں. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجد چلے جاتے تھے, سو جاتے تھے. میں دن گیا, سارے سو رہے ہیں, کیا ہوا یار سر نے تو جانا نہیں ہے, رات کو 8 بجے تک ویسے ہی بیٹھے رہیں گے, تو تھوڑا سا سر آرام کر لیتے ہیں. میں بھی چپ ہو گیا, میں کہا ٹھیک ہے سو جاؤ, باقی 8 بجے تک تو کام ویسے ہی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر یہ چیز تھی. دوسرا, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائمنگ کے حوالے سے یا رمضان کے یا ہمیں نارمل پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے, بہت بیسک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, یہ کبھی ہونا نہیں ہے لیکن پرائیویٹ آرگنائزیشن سے بھی مطلب وہ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے آج تک کیوں نہیں کیا. پاکستان کو بھی 75 ایئرز ہو گئے. وہ یہ ہے کہ میں ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ دیکھیں کہ اس کے بعد رمضان کی ٹائمنگ اور یہ سارے ڈسکشن یہ کہاں تک جا کے رکتی ہے. مثال کے طور پر اسلام میں ہے کہ صبح کی نماز پڑھو اور بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے جی, اب اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. آپ ملیشیا میں ہیں, آپ صبح کی نماز پڑھ لی آپ نے, اس کے بعد 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, اس کے بعد آپ آفس پہنچ گئے, 6 سے 2 بجے تک آپ آفس میں ہیں. اب آپ آ جائیں رمضان میں, پھر بھی 6 سے 2 بجے. وہ لوگ تو ڈسٹرب نہیں ہوتے, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. رمضان ہو یا نہ, صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے وہ شاید اذان پہ اٹھتے ہیں یا شاید اذان کے بعد اٹھتے ہیں, لیکن رمضان میں تھوڑا سا اذان سے پہلے اٹھ گئے, تو آدھے گھنٹے کا اتنا اثر ہو نہیں سکتا نارملی. اگر اس کو ہم HR پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جی HR کا کام تو ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے, تو اگر ہیلتھ کو دیکھنا ہے تو کیا ہم نے آج تک اس بارے میں کبھی بات کی کہ صبح ہمارا امپلائی اٹھتا ہے
وہ نماز پڑھتا ہے, فریش ہو جاتا ہے, پھر سو جاتا ہے, پھر 8 بجے بڑی مشکل سے اٹھتا ہے, سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, ناشتہ کر کے دوڑ رہا ہوتا ہے آفس. اس کے بعد ہم اس سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اس سے پروڈکٹیوٹی کی امید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا یہ جو ٹائمنگ ہے جو ہمیں بتائے گئے, اب بات ہوئی کہ مکس کرنے والی کہ ریلیجن کو مکس نہیں کرنا چاہیے. کام صاحب مکس ہوگا, ضرور ہوگا اور بالکل ہوگا. کیوں؟ اگر ایک امپلائی اس طرح نے کہا کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, اب رمضان کے بعد وہ نماز پڑھے گا, جب صبح اٹھے گا اور یہی روٹین ہوگی تو 40 ایئر کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک تو ہونا ہے, وہ اسپتال جائے گا. جو بھی ہو, آپ اس طرح علامہ اقبال نے کہا مذہب نہیں تو محفل جم بھی نہیں, تو پرابلم یہ کہ ہم مذہب کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اب اس مذہب کے مطابق ہی ہمیں آفس ٹائمنگ کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر ہم نے امپلائی سے پروڈکٹیوٹی والا کام لینا ہے. جو لفظ پروڈکٹیوٹی کی 2+2 5 کی طرف ایفیشنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ میرے سے چھوٹے سے پوائنٹس تھے. ضرور سر میں چاہوں گا کہ کیونکہ میں پہلی میری اس طرح کی میٹنگ ہے پبلک سیکٹر میں, تو کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ابھی جب ریزائن کر کے نکلا ہوں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں, پہلی بار کوئی اچھی بات سن رہا ہوں. تو میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمیشہ یہ زیادتی ہو جاتی ہے سر, یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے سر, تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن 1 منٹ لوں گا سر, لیکن اس کا بہت امپورٹنٹ. ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا سر کہ ٹائم تو گزر چکا ہے لیکن میں سی وی خود لے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, بچے لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے سامنے بول بھی لیتے. میں نے وہ بولا تو میں نے اس کو کہا کہ یار اب سچ بولوں یا جھوٹ بولوں. اس نے کہا سر سچ بولوں. میں نے کہا آپ کی جاب نہیں ہوگی. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا کیا ہو گیا, اگر ادھر نوکری نہیں ہوگی تو ان شیشوں کے باہر بہت بڑی دنیا ہے, تمہاری بھی جگہ ہے, مل جائے گی تمہیں. کہتے نہیں سر میرے 850 روپے لگ گئے ہیں اس درخواست کو یہاں تک پہنچانے میں. مجھے خیر وہ چائے شائے اس کو میں نے بلائی جانے دیا, اینڈ میں نے سیم اپلیکیشن اپنے آپ کو خود بھیجی, میرے 700 روپے لگ گئے. اٹسٹیشن والے نے 300 روپے لے لیے, ٹی سی ایس والے نے 200 روپے لے لیے وغیرہ. اس کے بعد میں نے پریکٹیکلی اس پہ کام کیا. یہ سر آپ لوگوں کے لیے تھا تھوڑا سا, شاید آپ لوگوں کا آن لائن ہو تو بہت اچھا ہے. جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہم کوئی مالدار لوگ نہیں ہیں. اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو ہمیں الٹا اس کو پیسے دینے چاہیے, نہ کہ اس کا 850 روپے کا خرچہ کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے 1 پیجر ایک فارم بنایا اور اس فارم کو بھی آن لائن کیا کہ پہلے بچہ ہمیں یہ بھیجے, اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے. اگر لگا کہ یہ بچہ انٹرویو تک آ سکتا ہے تو پھر اس کا 850 نہیں 8000 کا خرچہ بھی کر دیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن 8500 اپلیکیشن 7000 اپلیکیشن آپ کے پاس آ رہی ہوں اور سارے آپ پھینک رہے ہو, یہ تو قوم کے بچے ہیں, ان کے پیسے ہیں, ہمارے قوم کے پیسے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی جو بہت زیادہ پریکٹس کے اندر ہے. شکر ہے کافی آن لائن کی وجہ سے تو کم ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی کافی آرگنائزیشنز میں ہیں. تو ادھر کافی HR کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے اور اس کی ایک سجیشن بھی ہے اور ایک پریکٹیکل وہ اس کا حل بھی میں نے بتا دی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جیسے آپ نے بات کی ہے تو it's a paperless environment now. People are going towards automation and HR is automated now. So mostly the CVs are online and جیسے آپ forms کی بات کریں تو forms are online on most of the companies. And یہ جو چیز آپ خرچے کی بات کریں to understand in government sector it's still like this. If you have to apply to the government sector آپ کو CV کو post کرنا ہوتا ہے, وہ پورا process ہوتا ہے. But I hope they are going to change as well. But in most of the private sector, the HR is automated now. جی تھینک یو, بہت شکریہ. سوری آپ کا نام کیا؟ علیہ صاحب. علیہ صاحب ادھر ابھی آپ نے ایک بات کی تھی جو ٹائمنگ کے حوالے سے, اس میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا. پرائمریلی پاکستان میں جو ہم ٹائمنگس فالو کرتے ہیں وہ پریٹی مچ ویسٹرن کلچر ہے, 9 to 5 والا, 8 hours per day, 40 hours per week کا وہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارا. لیکن جو آپ نے بات کی ملیشیا کی جو ایگزامپل دیا, آئی تھنک فار دی اسلامک کنٹری اگر میں کہوں تو ہمیں وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اپنی جو ریلیجیس پریکٹس ہے اس کے لیے بھی. لیکن ایک اور چیز جو کہ ویسٹ بھی بہت پروموٹ کرتا ہے ورک لائف بیلنس کے حوالے سے. بیکاز اگر آپ شروع لیٹ سے 7 بجے یا 6:30 وٹ ایور ٹائم آپ اپنا آفس اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ 2-2:30 بجے تک وائنڈ اپ کر کے آپ گھر چلے جاتے ہیں, تو بائی دا ٹائم یو گیٹ ہوم اٹس اباؤٹ 3:30 یا 3 بجے ہوتے ہیں
depending on آپ کتنی دور رہتے ہیں. So that gives you a very good time to spend good time of a day with your family, kids وغیرہ جو بھی ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلچر کو چینج ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے اس چیز کو بلائنڈلی اس کو ہم نے فالو کر لیا, جو چیز وہاں پہ ہو رہی ہے وہی ہم نے یہاں امپلیمنٹ کر دی ہے. اور میں تو پرسنلی یہ چاہوں گا کہ 3 دن کا ویکینڈ ہونا چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ ٹائمنگ کو بھی تھوڑا سا کم کر لیں. 40 hours پر ویک ویسٹ والے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ 30 hours پر ویک کام کریں. پروڈکٹیوٹی اگر آپ کو مل رہی ہے 30 hours میں بھی, جو آپ 40 hours میں اچیو کرتے ہیں وہ اگر 30 میں بھی مل رہی ہے تو اسٹل آپ کو جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہے وہ تو مل رہا ہے. تو آئی ایگری ود یو وہاں پہ. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل پریٹی مچ صحیح ہے. اچھا, میں ایڈ کروں آپ کی بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن فارمز ہونا چاہیے. تو پریٹی مچ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اسی طرح ہے. ہم انٹرویو بھی ٹیمز کے اوپر کر لیتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے آنا دور سے, اس کا ٹائم نہ ویسٹ ہو, تو ہم پہلا انٹرویو جو ہے وہ بھی ٹیمز پہ کر لیتے ہیں کہ اگر شارٹ لسٹ ہوا تو پھر اس کو بلا لیں گے. میں آپ کو سر ایک مثال دوں. کووڈ میں مائی سیکنڈ ڈاٹر ہیڈ wanted to switch her job and she moved to Jazz. پہلا انٹرویو, سیکنڈ انٹرویو, تھرڈ انٹرویو, ایوری تھنگ. اور ایک دن TCS والے نے گھنٹی بجائی گھر کی, پتہ چلا بیگ اور لیپ ٹاپ بھی کرا. تو میرا خیال ہے آخری کے 6 مہینے وہ شاید دفتر گئی ہوگی. بھائی صاحب اگر مجھے صاحب کو دیکھنے دیں تھوڑا سا, جنہوں نے سوال کیا. تھینک یو. میری تصویر ٹھیک ہے, آج کافی اچھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا, تو یہ دیٹس ہاؤ دیز کمپنیز آپریٹ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو ورک ایٹ آل. تو یہ چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان ویسے 75 سال میں جتنا سیکھنا تھا اس سے اور 75 سال لگیں گے چاہے چیزیں امپروو. ٹائمنگ سوری میں بیچ میں اٹھ کے گیا تھا, سوال کیا تھا. 6 سے 2 والا 6 سے 2 from morning to 2 o'clock. Early morning to 2. I don't mind as far as اب اس کے لیے گورنمنٹ اس کو ریسٹرکٹ تو نہیں کر سکتی میرا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ جی آپ 6 سے 2 کریں. لیکن اگر امپلائرس کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی پرابلم ہونا چاہیے. صبح کی نماز کے بعد چلیں انشاءاللہ آپ جب اپنی کھولیں گے اس طرح سے شروع کریں, ہم آپ کو فالو کریں گے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیٹ از ویری آئیڈیل آف کورس فار ایوری بڈی. آئی وڈ لو اٹ. میں اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ ہم کیوں نہیں فجر کے بعد دفتر آ کے کام کر لیتے اور 1-2 بجے گھر سے جاتے. بٹ کوئی بات ہے, ٹائم زونس. پھر دیر آر کمپنیز جو کہ ڈفرینٹ ٹائم زونس پہ کام کر رہی ہیں, ان کے لیے پھر پاسبلٹی, بیکاز دین وی ہیو نو اوور لیپنگ ود آور ہیڈ آفیسرز یا اوورسیز. So that is one problem. There are so many things that اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. Anybody wants to say? رشید صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو. میں HR کا بندہ تو نہیں ہوں. آپ HR کو مینیج کرتے ہیں, میں HR کو پروڈیوس کرتا ہوں. ٹیچر 1-2 چیزیں ذرا ہٹ کر دی جو بھی ڈسکشن ہوئی. میڈم سے اجازت اگر میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے یہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے, ٹائم مینجمنٹ آ جاتی ہے, لیکن اس کی میں اصل اسپرٹ کو سمجھوں. آپ دیکھیں ٹائم فکس ہے, رمضان میں اور زیادہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ مل جاتی ہے. آپ 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوتے ہیں آپ کے روزے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیا کہنا چاہیے؟ جب ہم بات کر رہے ہیں, میں رشید صاحب سے ایگری کروں گا, یہ جو ڈسپلن کا لفظ ہے نا, ہمارے HR والے اس پہ بڑا زور دیتے ہیں معذرت کے ساتھ. ڈسپلن کا لفظ نکلا ہے ڈسائپل سے. ڈسائپل کہتے ہیں چیلے کو, ٹھیک ہے. آپ گرو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں تو چیلا کام کرے گا, تو ان سے کام لینا جو ہے دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن میں ہم
like when I use the word apply, मैं अपने आप को उससे वैसे ही सेपरेट कर लेता हूँ. क्या इसके लिए क्या और अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं? If I give respect to that human being, उसको मैं वैसे ही नीचे जाके खड़ा कर देता हूँ, तो ये इसका हाल हो सकता है. जितने मज़ाहब जो हैं वो हमें रेगुलेट करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हाउ आई कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. अगर मैं ये पहचान जाऊं, आई एम ए गुड क्रिश्चियन, आई एम ए गुड मुस्लिम, आई एम ए गुड हिंदू. ये तो हमने वैसे आपस में जो क्लैश डाल दी थी. कमिंग बैक टू रमजान, अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं मुसलमान हो गया. मेरी एडमिशन होगी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में. ठीक है जी, कि मैं एग्री करता हूँ कि जो आप सिलेबस पढ़ाएंगे मैं पढ़ता हूँ. बाकी जो चारों अरकान है वो हमारे ट्रेनिंग टूल्स हैं. आप अगर ट्रेनिंग के बाद मैं वो चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, देयर इज सम गैप, और उसके ऊपर मुझे तवज्जो देनी चाहिए. मैं नमाज की मिसाल ले लेता हूँ जो हमने उलमा कराम से सुना है कि आप वक्त पे नमाज पढ़े तो 100 नंबर मिलते हैं, और आप वक्त पे नहीं पढ़ते तो 33 नंबर मिलते हैं. क्या अल्लाह ताला मुझे 100 नहीं दे सकता था? तो व्हाट वाज द लेसन? आपको 5 दिन में 5 दफा वक्त की पाबंदी की ट्रेनिंग दी जा रही है. बदकिस्मती से गो इन द मुस्लिम वर्ल्ड दजियां उड़ा देते हैं हम टाइम. अभी हम उसी पे बैठते. ये हमें आपको वो कुछ कहना नहीं पड़े कि 6 बजे या 7 बजे. वंस द रियलाइजेशन इज देयर. और दूसरा ये है कि हम अगर पार्टिसिपेट की अप्रोच करें, जिन्होंने हम व्हाई आई शुड फिक्स टाइम फॉर माय कोलीग, उससे मैं क्यों नहीं पूछता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सा चीज जो वो सूट करती है. दूसरी बात ये, कमिंग बैक टू नमाज, अगर आप इमाम के अलावा खड़े हो जाए, आपकी नमाज ही नहीं होती. व्हाट इज लेसन? इज ए लीडरशिप. मुस्लिम वर्ड नो लीडरशिप. मुझे तो कहीं नजर नहीं आती सर. हम ज्यादा वो स्वाब के चक्कर में. नाउ द थर्ड थिंग, मौलवी साहब कहते हैं या मस्जिद में पढ़े तो नमाज आपको कितना 28 गुना ज्यादा साफ होते हैं. यार उसका मुझे रीजन तो पता होना चाहिए. ये सर बंद हो गया ये पता, मेरा इसको भी टाइमिंग का फर्क पड़ गया. सॉरी. अब मस्जिद में 28 गुना स्वाब क्यों है? हमने मस्जिद को इबादत गाह का नाम दे दिया. इबादत के साथ मस्जिद इज ए कम्युनिटी सेंटर. इबादत गाह क्या होती है? अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से देखें, जहां भी आप इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, इबादत गाह है. अब जब हमने मस्जिद को, दिस वाज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट वाज ए कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पर आपने तमाम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को रियलाइज करने हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढने हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, उसको हमने बिल्कुल बंद करके रख दिया. तो वो 28 गुना स्वाब इसलिए रखा गया था कि आपकी सोसाइटी बिल्ड हो. जब आपकी सोसाइटी बिल्ड होगी तो फिर ये आपके मसले बहुत ज्यादा जो कम हो जाते हैं. तो ये ट्रेनिंग टूल्स को हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिया है. माय पर्सनल व्यू इज, हमारे जगह इसलिए होते हैं कि नमाज, हज, रोजा, ज़कात को मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिया है. दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव ये ट्रेनिंग टूल्स हैं टू मेक ए पर्सन गुड ह्यूमन बीइंग. अगेन आई वुड कम बैक, हु इज ए गुड ह्यूमन बीइंग who can differentiate what is right, what is wrong. If you do that, you are a good Christian, you are a good Muslim. So ये मेरी थोड़ी सी मालूमात है. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी अफ्तारी को थोड़ा सा बहुत ब्रीफ कर दिया. जी, वो डिजाइन से आप बात करना चाह रहे हैं? I don't think so need a mic. I have a mic in my mouth as well. मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई इंटरेक्शन का मौका मिले, लेकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सारे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो दे माइट कंसिडर अस दैट कि दे आर लाइक दे आर जस्ट
कमिंग इन ऑर्गेनाइजेशन तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जैसा थिंग आई वुड लाइक टू से कि ये सेशन शायद कुछ अरसा पहले हो जाता रमज़ान के स्टार्ट में, तो बहुत सी प्रोडक्टिव बातें ऐसी थी कि जिनको हम प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. So I will specifically talk about my organization. That my organization is in a startup. We have a team of 25 employees. तो जब हम एम्प्लॉय वेलबींग की बात करते हैं तो मेरा क्वेश्चन है कि हम फिर स्मॉल स्टार्टअप रह के एम्प्लॉय वेलबींग जो है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं. और दूसरा, हमने जब रमज़ान प्रोडक्टिविटी की बात की तो मुझे पर्सनली मैंने किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ ऑब्जर्व नहीं की कि जो मुझे फील हो कि रमज़ान की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हुई हो, बल्कि मुझे ये फील हुआ है कि क्योंकि हमारी टाइमिंग जो हमने रिड्यूस किए हैं तो एम्प्लॉयज़ को खुद ये ख्याल है कि हमारी टाइमिंग क्योंकि रिड्यूस हो गई है, तो हमने जो अपनी जो टास्क असाइन हुए हैं वीकली बेसिस पे उनको हमने जल्दी डे वाइज जो प्लान करना है और जल्दी उसको ख़त्म करना है. बट हाँ, हमें एक प्रॉब्लम फेस हुआ है ऑन क्लाइंट बेसिस कि क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं हम जो भी करेंगे इसके बाद करेंगे, तो दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस. सो दूसरी बात हमने की कि हम रमज़ान में जो है वो कोई हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए ऑनलाइन वर्क में. सो वी स्टार्टेड इन 2018 एंड फ्रॉम 2018 टू 2020 वी वर्क ऑनलाइन, वर्चुअल हमने काम किया और हमें इस चीज़ पे इन्फोर्स किया कि हम जो है इसको फिजिकल लेके आए, क्योंकि बीइंग वर्किंग वर्चुअली हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो रही थी. तो मैं नहीं समझता कि हमें दोबारा कभी भी जो है वो वर्चुअल जाना चाहिए. हाँ, हमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि जैसे कोविड के सर्कमस्टेंसेस हो गया, इसके अलावा किसी का वैसे भी इशू है कि एम्प्लॉय के लिए रिसेंटली वन ऑफ माई मेंबर हैविंग एन इशू के उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वो वर्क फ्रॉम होम दे दी, तो वी अवॉर्डेड है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है. लेकिन जनरली जो है वो रमज़ान को हमने जस्ट इट्स अ मिथ कि रमज़ान में हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और हमें फिर इस तरह करना चाहिए. बट आई विल से कि बीइंग अ मुस्लिम, जैसे सर ने बात की कि जितना हमें हार्डशिप्स मिलेंगी उतना हमें सवाब मिलेगा इस चीज़ों का. तो आई विल मस्ट से कि हम टाइमिंग को जो रखें उनको रिड्यूस ना करें, बल्कि इस पर फोकस करें कि रमज़ान में हम किस तरह से अपने आप को मज़ीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग जो है वो मटीरियल जो चीज़ें कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका. अब हमारा ऑलमोस्ट पैनल डिस्कशन का टाइम खत्म हो चुका है. इसके बाद हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ आए हैं उनके लिए और उसके अलावा हमारा एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम थी, उसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. मैं अमर को मैं इन्वाइट करूँगा प्लीज़ यहाँ पे. ब्रदर जेम्स प्लीज़ और गीता प्लीज़. This was the first time that we ran this course, CHRP, Certified Human Resource Professionals. और इसमें इस मरतबा 12 participants ने participate किया. Thank you, sir. And all have graduated. They all participated well. And now we are going to run a 5th time tomorrow, starting from tomorrow. So जितने इस 4th time में graduate किए, mostly they were attending online. On-site हमारे पास facility ज़रूर मौजूद है, but we made it feasible for them और उनको ज़्यादा सहूलत यही हुई that they attended online. आज हमारे साथ इस graduation ceremony में सिर्फ 2 participants हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं. Few are attending online at the moment. We'll post them by mail. And just to those who are here, we would like to invite them in front to receive their certificate, but before that, to hand over the certificate, already is a faculty member and the CEO of institution, Brother James Litton, he is here, and then my member Naveed, one of the runners of the program, she's been running the program beside Mansoor Saab. So now, Mr. Salman Ahmed from Nasr University, GMP DC, Professional Development Center. Sir, would you mind going from there? Yeah, we can pass through. Accompanying him, Mr. Iftikhar from Scholars Foundation, Azad Jammu and Kashmir, to present the first certificate to Faisal Qureshi. Thank you for your participation.
successfully completed the course. Next is Mr. Riyaz Gill, also one of the faculty members. He's also completed the course. Thank you. Thank you. And now it's time to honor our panelists with the certificate, Ms. Aga, Ifat Aga. Yeah. Thank you for being a part of panelists tonight, this evening. Thank you very much for having me here. Thank you. I was waiting for. Thank you, Salman Saab. Thank you, Takar Saab. Thank you, Ms. Aga. Thank you. And next is Tabinda Osman. She's left. Oh, sorry. Nasheen Paraja. She's left. Alright. Salman Ahmad Saab. And to present him, Mr. Ashraf Mal would come forward and Shaukat Mahmood Saab. Yes. Thank you for your precious time and being a part of panelists. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. And I would like, excuse me, sir, if you keep standing. I would like Professor Rashid Saab to come forward, please, to present the certificate to Mr. Sajwani, Mohammad Sajwani. ये रोजा लग रहा है, तालियां भी नहीं बजा रहा। Thank you. Thank you so much. She was the first one to receive. Over to Mansoor Saab. थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टाइम बैठ गया, उसके बाद यहाँ पे हम अफ्तारी करेंगे और अपनी नेटवर्किंग करेंगे। तो कोई बात करना चाह रहे हो तो इस सारे जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया, पैनल डिस्कशन की, एक दूसरे के ख्यालात के बारे में वाकफियत हासिल की, तो कोई कमेंट? जी प्लीज, फ्रॉम गो डिज़ाइन। Yes. We did not hear from the women. Yeah, women. So much. आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। चले मैं भी थोड़ा सा हमारे जो टीम मेंबर हैं उनकी तरह अपना गला जो है वो थोड़ा खोल लेता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा एक कमेंट था जो कि इनको मैंने बताया था, बट उन्होंने थोड़ा सा जो है वो एडअप करना शायद भूल गए, मिस कर गए। तो वो पॉइंट ये था कि जो हमारा ये फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आई थिंक दिस इज़ अ ट्रैप। आप एक एम्प्लॉय को देते हैं कि ओके आप बेशक 3 घंटे जो है वो दिन में काम कर सकते हैं, 4 घंटे आप किसी और टाइम काम कर सकते हैं, जब चाहें आप जो है वो काम कर सकते हैं। बट इफ वी लुक एट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली वी आर हायरिंग देम फॉर 24 आवर्स। वो इसके अलावा फिर वो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस डेवलप करने के अंदर जो हमारा टाइम लगता है वो 25 मिनट्स लगते हैं टू डेवलप फोकस, एंड देन हम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। हमारी जो एजेंसी है वो आईटी की एजेंसी है, हम डिजाइनिंग का काम करते हैं, हम ब्रांड्स की मार्केटिंग का काम करते हैं। तो हमारा जो काम होता है वो सोचने का काम होता है।
तो हाउ डू यू थिंक, आई विल क्वेश्चन फ्रॉम द पैनलिस्ट दैट हमारी जो एजेंसी है कि वो किस तरह से फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर जो है वो फिट होती है, क्योंकि जब हम सोचना जो है वो स्टार्ट करते हैं तो फिर एक एक्सट्रीम होती है आइडियाज़ की जो कि हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बट जब हम फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर काम करते हैं तो वो जो स्ट्रीम होती है वो टूटती रहती है और हमने 24 आवर्स जो है वो एम्प्लॉइज को हायर किया होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि करंटली हमारी एक टीम मेंबर है, वो जो है फ्लेक्सिबल आवर्स करना चाह रही हैं कि मैं फ्लेक्सिबल आवर्स करती हूँ, लेकिन हमने जो नोट किया वो ये है कि वो फुल डे काम करती हैं, वो सहरी के बाद 3 घंटे काम करती हैं, और उसके बाद अगर उनको क्लाइंट के साथ जो है वो मीटिंग करना पड़ती है या क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना पड़ता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज आ रहे होते हैं, देन शी इज रिप्लाइंग टू दोज मैसेजेस। तो उसके बाद क्या होता है, वो अफ्तारी से पहले भी कुछ काम करती हैं, उसके बाद अफ्तारी और जो हमारे पास टाइम होता है इशा का, उसके दरमियान भी काम करती हैं। तो हमें उनके लिए फील होता है कि इनको नहीं करना चाहिए, बट शी सेज कि इट्स ओके फॉर मी, तो मे बी दिस इज ओके फॉर हर टू वर्क 24 आवर्स, लेकिन सब लोगों के लिए ये फिर ओके नहीं होता, हम फ्लेक्सिबल आवर्स जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू से कि हम इसको किस तरह से अपनी एजेंसी के अंदर या डिजाइन एंड जो डेवलपमेंट की या मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं उसके अंदर हम इस चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको ये समझ जरूर आ गई होगी कि एचआर का काम कितना मुश्किल होता है। Yes, definitely मैं अपनी एचआर की बेसिकली जो मेरा काम है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, और मेरे क्वेश्चन ये भी था कि प्रोडक्टिविटी जब लो हो रही हो तो फिर वेल बीइंग की तरफ सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा था, तो मुझे हर टाइम प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है। एचआर आके मुझे कहें कि ओके हमें फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, हमें थोड़े रमजान के अंदर कम आवर्स चाहिए, मैं कहूँ कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो हो रही है तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे? तो ये इश्यूज जो है वो हमें फेस करना पड़ते हैं, तो मुझे थोड़ा इसका ये बता दें कि इसको हम किस तरह से फिर हैंडल करें। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि वो खातून जो काम करती हैं आपके साथ वो फ्लेक्सिबल आ जाती है, ठीक है। देयर आर पीपल जो कि कहते हैं हमें मॉर्निंग टू आफ्टरनून की शिफ्ट दे दे, रमजान की करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इफ्तार के बाद कर लें, कुछ देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो आपको एचआर को या तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल हो कि हर किस्म की चीज आपने दी हुई होगी, जी फ्लेक्सिबल भी कर लो, घर से भी कर लो, वर्क फ्रॉम होम भी कर लो, सब कुछ कर लो, या फिर आपने एक कंसेंसस को रीच करना होगा, तो फॉर दैट यू हैव टू कोलैबोरेट, यू हैव टू डिसाइड प्री रमजान, या आप डिसाइड करें कि आपने कौन सा बेस्ट सिस्टम, थोड़ा सा मेजोरिटी को भी देखें कि मेजोरिटी क्या कहती है। फिर सम लेडीज कभी बार स्पेशल कंसिडरेशन करना पड़ता है, घर में जाके सिर्फ काम नहीं करना, कार भी बनाना है, तो ओके देन मेक अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द लेडीज। देयर इज नो वन क्या कहते हैं, हाँ, नॉट वन। सो यू हैव टू थिंक ऑफ द पीपल यू हैव कि किस किस्म के लोग हैं, मेजोरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, हम किस तरह से इनको फैसिलिटेट कर सकेंगे, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। इफ इट वर्क्स फॉर हर, इट वर्क्स फॉर हर। लेकिन प्रोडक्टिविटी की जो आप बात करें ना, देखें दैट इज रियली अप टू द पीपल ऑल्सो। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी डाउन होते नहीं देखी, ठीक है। जब से रमजान हुआ, आज 20वां रोज है, तो मैंने लोगों को काम करते ही देखा है। सुबह हाँ, लेट कमर्स होते हैं, वो हमेशा ही लेट कमर्स होते हैं, उनको भी सुबह एक डांट होती है कि भाई वक्त क्यों नहीं आते, लेकिन काम में हर किसी के नहीं आना प्रोडक्टिव है। जब जाते हैं अपना काम पूरा करके जाते हैं, घर से भी मीटिंग अटेंड करते हैं। सो देयर इज नॉट रियली वन यार्डस्टिक, जिस तरह कह रहे हैं नॉट वन यार्डस्टिक। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, बट यू हैव टू आल्सो थिंक कि आपके मेजॉरिटी को क्या सूट करना है। यू हैव टू लुक एट दैट आल्सो। मैं जस्ट क्विकली इसलिए भी कहना चाह रहा था कि देखिए, मैं आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है। ये जो आप बात कर रहे थे, आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के, और टेक्निकल साइड पे, प्रोग्रामिंग साइड पे, मार्केटिंग साइड पे, यू नीड टू हैव दीज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वेरी फ्रीक्वेंटली। प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी साइड, डेटाबेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये ऐसे एरियाज हैं जिसमें कि आप एक टास्क किसी को देते हैं और इन देयर फ्री टाइम दे कैन थिंक अबाउट इट। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई जस्ट अ वेरी माइनर से एग्जांपल है, कोई लोगोस डिजाइन करने हैं आपने, राइट। अब आप उनको ये कह देते हैं जी कल हमारा 11 से 12 के बीच में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, यू हैव द टाइम टू थिंक अबाउट इट, जॉट डाउन योर पॉइंट्स, आप अपने पास लिख लें। 11 से 12 के बीच में वी ऑल गेट टुगेदर और उसमें हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे क्विकली। हो सकता है इसको हम जल्दी वाइंड अप कर लें अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं,
तो मेरा ख्याल से आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एक टाइम सेट करें, थोड़ा सा उनको टास्क दे दें, डेलीगेट करें और उसको बताएं कि ये चीज़ें आपने करनी है, तो यू कम अप विद एन आइडिया ऑन दिस टाइम, विल डू अ क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद द टीम, और अगर टीम एग्री करती है जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट अगर आपको मिल जाता है तो आई थिंक आपका वो जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो हो जाएगी। बोलिए। I can listen. Actually, it depends on it's very industry to industry. Okay. Currently, we do have such industries in Pakistan who's working in night shift. They mostly are in marketing and IT industries. Let me tell you. उसका आप सेटअप एक प्लान कर सकते हैं अपना डिपार्टमेंट, अगर ये इंडस्ट्री टू वैरी करता है तो डिपार्टमेंट भी वैरी कर सकता है। वी डू हैव इन मेरी प्रीवियस कंपनी जो थी, हमने डिपार्टमेंट्स की भी टाइमिंग को डिफरेंट किए थे प्रीवियस कुछ उसमें रमजान टाइमिंग में, कि कुछ डिपार्टमेंट जो है वो तारीख के बाद काम करेंगे नाइट शिफ्ट में, जो थॉट प्रोवोकिंग है, जो ज़्यादा रियलिस्टिक मार्केटिंग के हवाले से काम करना चाहते हैं, जो आइडियाज़ पे काम करते हैं, उनको ऑब्वियसली दे टेक टाइम एंड दे नीड कंटिन्यूसली अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने सोल्यूशंस निकालने के लिए। आई मीन यू हैव सो मैनी स्टफ, आई रियली नो, बट द थिंग इज आप अपने डिपार्टमेंट के टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। व्हाई नॉट आस्क विद योर मैनेजमेंट दैट वी डू हैव सच थिंग इन लाइन इन आवर डिपार्टमेंट, जो हम जो है कंटिन्यूटी के साथ जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं, विदाउट कंटिन्यूटी, विदाउट ब्रेकिंग। अगर उसमें कोई ऐसा आता है टाइमिंग का हैजर्ड्स आता है तो उसको आप बिल्कुल वॉश आउट कर दें, आप बिल्कुल डिफरेंट टाइमिंग में चले जाएं। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जिस पे आप काम कर सकते हैं कि आप नाइट शिफ्ट पे चले जाएं। व्हाई नॉट नाइट शिफ्ट पे अच्छी प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हैं। आई मीन मेरे एक भांजे हैं, वो इस कॉल सेंटर में काम करते हैं। दे केम अराउंड मेरे ख्याल शहरी के वक्त आते हैं वो, और उसके बाद जो है शहरी करते हैं और सो जाते हैं, बाकी पूरा रात काम करते हैं। वो आईटी कंपनी है और जो है मार्केटिंग पे और उस पर काम करती है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन कैन टेक। एंड एज फार एज रमज़ान टाइमिंग आर कंसर्न, आई वुड से कि जैसे मेरे भाई ने भी बात की कि इबादत जो है वो व्हेन यू स्टेप आउट फ्रॉम योर होम, अल्लाह ताला ने रमज़ान में एक ये बरकत डाली है कि आप जब सो रहे हैं वो भी इबादत है, तो आप जब काम कर रहे हैं तो वो भी इबादत है। तो अपने काम को जो इबादत समझ के करेंगे तो प्रोडक्टिविटी वैसी सामने आ जाएगी। थैंक यू। From the HR end, I would like to add something. That is very pivotal in the organization culture. In my experience, I have come to see. In my experience, I have come to see a lot of certain things that is happening frequently on organization culture. Unwarranted comments. You are calling someone irrespective of his designation, his name, or incumbent or candidate. You are calling by them with different slangs. Even a senior personnel calling their junior personnel in slang language. Even a lower level person calling his senior in a slang language. That in international scenario particularly, and in middle size organization, that culture is harming in a conducive environment that has a very negative effect on productivity and employee well-being. And that culture is strictly prohibited by the organizations, and that should be condemned at every level, at every corner. Because that culture, like the guy who's sitting beside me, among us, he was calling like a name, Bacha, this is not the right, this is not even a tone to call somebody, this is something offensive. This is something offensive, that is ridiculous way to call somebody.
So that culture should be. Yes, that we do totally agree with you. Thank you so much for your contribution today, and I would like to thank the panel as well. It was a very productive talk today, and there are so many opinions one can have. And HR is there to take the opinions, but the decision is from the HR side. So HR is empathetic, and being an HR professional, what I can suggest you is that HR is the most difficult job, and managing employers and employees at the same time is not an easy task. You are just looking at one from one perspective, but if you are sitting on the chair of an HR, then you have to see both the prospects. So thank you so much for being here, and I hand over the mic to Mansoor Saab. Thank you for the contribution. थैंक यू वेरी मच. अभी ब्रेक है, जब तक कि अफ्तारी का टाइम नहीं होता तो आप कर सकते हैं. अफ्तारी यहीं पे सर्व की जाएगी. उसके बाद एक तो ग्रुप फोटो हम ले